Two metallic plates A and B, each of area 5 into 10 raised to power minus 4 meter square, are placed parallel to each other at a separation of 1 centimeter. Plate B carries a positive charge of 33.7 picocoulomb, and a monochromatic beam of light with photons of energy 5 electron volt each starts falling on plate A at t is equal to 0, so that 10 raised to 16 photons fall on it per square meter per second. Assume that one photoelectron is emitted for every 10 raised to 6 incident photons. Also assume that all the emitted photoelectrons are collected by plate B and the work function of plate A remains constant at the value of 2 electron volt. The electric field between the plates at the end of 10 seconds. So क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप एक बार और रीड आउट भी कर सकते हो और देन आपको थोड़ा समझ में और आ जाएगा। और अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो सपोज हमारे पास दो मेटालिक प्लेट्स हैं, एक मेटालिक प्लेट ए एंड सेकंड मेटालिक प्लेट है बी। दोनों की दोनों मेटालिक प्लेट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है एंड हैविंग ए area of A is equal to 5 into 10 raised to power minus 4 मीटर स्क्वायर। इतना जो है प्लेट का एरिया होगा कुछ इस तरह से, जैसे ये प्लेट प्लेस्ड है ऐसे ही प्लेट भी प्लेस्ड है एंड दोनों की दोनों प्लेट्स पैरेलली प्लेस्ड है सच दैट जो दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फर्दर प्लेट बी पर एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू है 33.7 picocoulomb और ये पॉजिटिव चार्ज है। Then a monochromatic beam of light with photons of energy 5 electron volt starts falling on plate A at t equal to 0. अब प्लेट A पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है जिसके फोटोन्स की जो एनर्जी है h nu is equal to 5 electron volt. Also given जो ये मटेरियल है A, इसका जो वर्क फंक्शन है दैट इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। ओके, इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। इट इज गिवन दैट 10 raised to 16 photons fall on it per square meter per second। मतलब एक यूनिट एरिया में एंड यूनिट टाइम में about 10 raised to 16 photons fall करते हैं इस प्लेट A पर एंड ऑल्सो इट इज गिवन दैट 10 raised to 6 photons के कोरस्पॉन्डिंग एक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। देन 10 raised to 16 photons के कोरस्पॉन्डिंग इन यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम में कितने फोटोन्स फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। So this will be 10 raised to 16 divided by 10 raised to 6. This will be 10 raised to 10 photoelectrons per unit area per unit time. Okay, then number of photoelectrons emitted through the total area in 10 seconds, number of photoelectrons emitted through total area in 10 seconds will be equal to 10 raised to 10 into area कितना गिवन है 5 into 10 raised to minus 4 और 10 seconds को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। We will get n to be 5 into 10 raised to minus plus 7
इतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो जाएंगे प्लेट ए से 10 सेकेंड्स में थ्रू दिस टोटल प्लेट एरिया। एंड ये जो प्लेट एरियाज एमिट आउट होंगे दिस विल गो टू प्लेट बी, ठीक है, विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी थी that is spent in the work function. Now charge on plate A is equal to Ne, which is equal to number of photoelectrons emitted plus Ne, actually जो electrons हैं वो emit out हो रहे हैं. So this is equal to 5 into 10 raised to power plus 7 into charge on one electron, that is 1.6 into 10 raised to power minus 19. So this comes out to be 8 picocoulomb plus में, और इतना ही नेगेटिव चार्ज प्लेट बी पर आ जाएगा. सो प्लेट बी पे जो चार्ज हो जाएगा दैट विल बी 33.7 minus 8 picocoulomb is equal to 25.7 picocoulomb. So the electric field between the two plates will be equal to E is equal to charge on plate B minus charge on plate A divided by 2 times epsilon naught A. So this is equal to 25.7 minus 8 into 10 raised to minus 12 divided by 2 into 8.85 into 10 raised to minus 12 into 5 into 10 raised to minus 4. On solving this, we will get the value to be 2 into 10 raised to 3 Newton per coulomb. मतलब इतना मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा in between the two plates.